This World Cup journey to game on है। मैं हूं फखर आलम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं। And what an outstandingly amazing game of cricket that all cricketing fans, sports fans have witnessed today. Incredible scenes at Lord's in London, and finally, after 44 years of waiting, England lift the World Cup. And what a sensational game of cricket we have witnessed. It's for our generation, for all of us, and for all those people who are at the Lords, this is going to be remembered forever. As long as you play cricket, you follow cricket, you watch cricket, you will remember this one. Fantastic game of cricket. And in the end, we'd like to congratulate all the English players, the English Cricket Board, and England fans. Congratulations on winning this one and becoming the champions for the first time in 44 years. And with that, let's take a look at the match summary. This is how it went down. It was toss won by Kane Williamson, perhaps one of the finest captains of this World Cup. And we all questioned that decision. And now we know that the man always had a plan. Look what they did. They came out. Guptill was told that he has a complete and absolute go at things. And he did try his best, put up 19. Nichols coming out today, finally 55 runs. Williamson, again, trying to put up a kind of trying to gel the innings with 30 runs in there. Latham made a very important 47. And all in all, 241 for 8. It did not look like enough. There were 30 extras in that. Good bowling by the English bowlers. Of course, Chris Woakes there again taking 3 wickets, and Liam Plunkett in those middle overs taking 3 wickets. And this is how it ended up. 241 for 8 to chase. Looked like this was going to be all done. There were experts at Lord's Cricket Ground, some of our own friends, Basit and Waqar Yunus, who said, oh, this is coming home. This is already done. It is not going to be a big game. But that's what it tells you. The cricket is a funny game. You could be an expert all you like and all you want and pretend to know everything about the game. But this is what cricket does. It brings you surprises like never before. And when the English boys came out to chase, this is how it went down. Roy 17, Bairstow 36, Root out for 7, Morgan 9. And it was this very important partnership of Butler and Stokes that basically gave this momentum to the English team to come close all the way to the last over. And there was a tie, an absolute tie, taking us into the first super over in the history of ODI cricket, one-day international cricket. The first ever super over. But look at the bowling card there for the New Zealanders. Trent bowled 10 overs, and he was their most expensive today, 67 runs. Henry there started off really good with the new ball, but ended up giving 40 runs, picked up 1 wicket. It was Ferguson and Neesham that picked up the 3 wickets each, and it was again well, what do you say? It was a tie, and that tie happened because in the last over there was a throw by the fielder that bounced off Ben Stokes' bat and went for a boundary, and that is called nothing but sheer and absolute bad luck. So that's how it ended. We went into a super over. England batted first, put up 15 runs, and 16 was what was required by New Zealand. New Zealand came out and they scored 15 runs. That was the second tie of the day. But after 2 ties in the final at Lord's, the way technical rules were set up, it was England that were to lift the World Cup. So this is what I say. To all the English fans, congratulations. To the English team, congratulations. England, you lifted the World Cup, and congratulations. You waited 44 years for it. But Kane Williamson and New Zealand and all the Kiwis, Black Caps, everywhere in the world, fans, you won our hearts. You're the champions of our hearts, and cricketing fans all over. The resilience that you've shown throughout this World Cup and the way that you've gone about your business unassumingly and, just quietly just sliding under the radar. It's just been fantastic cricket by Kane Williamson and his entire team. With that, let me bring in my guests, my panelists for the last time on this ICC 2019 Men's World Cup. It is with me, the Lord of Lords, the double centurion of Lords, Janab Mohsin Khan Sahab. Mohsin bhai, welcome back to the studio. With him, one of the fantastic wicketkeepers of his era, the finest behind the stumps, and also captain Pakistan, coached Afghanistan, Janab Rashid Latif Sahab. Rashid bhai, welcome back to the studio. With me, ladies and gentlemen, the legend himself, the fastest and the most feared fast bowlers in the game that has ever witnessed. And today he saw the World Cup at final at Lord's, and he remembered his 99 World Cup final. And you know what? I could see in his eyes. He knew they had it in 99 and they just let it slip.
With me, the legend himself, Mr. Shoaib. Shoaib, welcome back to the studio, man. And with me is the Zulu man, the leading tribesman, the warrior who always fought like a warrior for South Africa with the bat and ball, the all-rounder par excellence, Mr. Lance Klusner. Lance, welcome back to the studio for the last time and going back home. And with us, ladies and gentlemen, the head of PTV Sports, one of the finest historians, custodians of all the data on cricket, on its history, and the know-how on the inside of the game is Dr. Nauman. Dr. Saab, welcome back to the studio one more time. Great to have you. Gentlemen, congratulations. You have successfully completed the ICC 2019 Men's World Cup. What a game that was, Lance. Unbelievable. What 2 games that was? Yes, 2 games actually. Yeah, unbelievable. I mean, that's the way that ebbed and flowed, and it was England winning, then it was New Zealand, and it was unbelievable, really. And as you said, no, congratulations to England. I thought, you know, not just over this World Cup, but in the last build-up the 4 years to this World Cup, it's been a master plan. So well done to them. But as you said, New Zealand certainly won our hearts today. Oh, they did. They did. They played like champions. There's no question about it. You know, I think personally, I mean, on all your cricketing history, have you ever seen a game of cricket like this? Very exciting, I must say. कि मतलब जितना भी इसके लिए बात कही जाए कम है. और यहाँ मैं hats off to New Zealand जिस तरह वो क्रिकेट खेली है, because सुबह टॉस का डाउट हो रहा था, वो गए. If you remember, मैंने आपसे कहा था ब्रेव डिसीजन लिया है, पॉजिटिव डिसीजन लिया है, 241 स्कोर किया मुश्किल कंडीशंस में. और ऑल टुगेदर समराइज करते हुए कहूँगा, फिर जो इनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है, इंग्लैंड के बैट्समैन तो नाच रहे थे शुरू के 6-8-10 ओवर में, उनको पता ही नहीं चल रहा था. एंड आई थिंक टेक्निकली देखा जाए तो इंग्लैंड हैज़ वन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी एज अ क्रिकेटर, इंग्लैंड हैज़ वन दिस मैच. If this, I wouldn't say the cup. Okay, if on the paper it will be England, the world champion, and माशाल्लाह मुबारक हो उनको. लेकिन जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है, कंडीशन में बैटिंग करके एक टारगेट दिया, फिर बॉलिंग की, फिर फील्डिंग की, क्या उनकी ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी. अगर ये स्टोक्स की और बटलर की पार्टनरशिप नहीं होती तो ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, शायद वो 200 टच नहीं करते. ये कम से कम हो सकता 40-50 रन से मैच हार जाते. तो बहरहाल क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड कि वो जीते इसको. लेकिन हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड कि उन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली है ऑल राउंड. एब्सोल्युटली कमाल की क्रिकेट खेली है. इतने प्रेशर में जो फील्डिंग दिखाई है आज न्यूजीलैंड ने, खासतौर पे आखिर में, वाज रियली फिनोमिनल. राशिद भाई, आखिर ही में तो नहीं दिखाई. लास्ट 9 बॉल थे वो, अगर इनके पास हैं वो देख लेते हैं. क्योंकि बॉल ने जो कैच छोड़ा है वो देखें, उस वक्त चाहिए थे 22 रन 9 बॉल के ऊपर. उसको ज़रूरत नहीं थी कैच पकड़ने की, उसको सिर्फ मारना था. 5 रन बच रहे थे वहाँ पे, 1 रन बनता. यहाँ पे दिमाग का काम था सिर्फ. वो 1 रन बनता, वो बाउंड्री से बाहर भी चला जाता, गप्पल करीब था, वो फेंक देता. 5 रन. दूसरा आदिल रशीद जिस पर रन आउट हुआ है, यहाँ से लॉन्ग ऑन से उसने थ्रो की है. करेक्ट. जब बैटिंग एंड पे करता तो बैटिंग एंड पे ना भी करती, यहाँ से भी अगर बॉलर भी करता ना, वो भागना शुरू हुआ था भी वहाँ से, उसने वहाँ पे रन आउट कर दिया. अगर वहाँ करता तो मैच ओवर हो गया था. मिस्टेक हुई है थोड़ी सी. एक तो बल्ले से लगे चला गया, उसको कुछ नहीं. लेकिन नर्व का गेम होता है. यहाँ पे फील्डिंग में लास्ट 9 बॉल जो है ना, वहाँ से मैच हार गए ये लोग, सिर्फ फील्डिंग की वजह से. बिल्कुल. एक्चुअली लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है ये 3 बॉलें थी जो 3 मिस फील्डिंग हुई है. असल में ये थी उनके लिए, क्योंकि बॉल का जो है ना वो कैच हारे तो फिर भी नहीं ना, बॉल फेंक सकता था. वो 5 रन बचते थे. हारे तो फिर भी नहीं, टाई हुआ मैच. वर्ल्ड कप तो नहीं मिला ना हमारी. वो एक अलग बात है, वर्ल्ड कप नहीं मिला टेक्निकलिटी के ऊपर, पर टाई हुआ. लेकिन बोल्ट के लिए एक बात कहूंगा ना, अक्षित के बोल्ट जब उसको कैच करने गया है ना, तो वो बिल्कुल रोप पे चला गया था. और उसको अगर वो पुश भी करने की उसने कोशिश की, लेकिन उसका स्कर्टिंग पे. और मैं सलाम करता हूँ इन लोगों को, खड़क करके उसका हाथ उठाए गप्तल का कि ना, इट्स अ 6. दैट शोज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ देम. और उधर मैं भी बता दूं आपको कि अगर बटलर को वो उसको, आई बेग यू पार्डन, स्टोक्स को बॉल लग के 4 नहीं हो जाता, यानी कि ऑल टुगेदर, तो वो भी नहीं भागते. वो भी नहीं भागते. लेकिन भागे नहीं, वो नहीं भागे. अगर भागते भी नहीं, उसने हाथ खड़े कर दिए. अगर वो अपोलोजाइज किया, अगर वो रुक भी जाता, बॉल बाउंड्री पे नहीं जाता, तो वो नहीं भागते. तो ये आई मीन एक तो मजेदार क्रिकेट देखने को मिली, अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप की मिली. और जो विलियमसन को जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दे के उसको जो प्राइज दिया है कि बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, और ये करके आई थिंक बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इवन हिज कंडक्ट एज अ कैप्टन एंड एवरीथिंग. क्या बात है. आई टेल यू, आप देखें एंड तक केन विलियमसन ने इमोशन अपना जो है ना बिल्कुल नहीं दे दिया. एंड टॉकिंग अबाउट इमोशंस, आई नो शोएब, यू वर गेटिंग वेरी इमोशनल व्हाइल यू वर वाचिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप. व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर हार्ट?
You know, I could see myself running in, bowling the last over and winning the World Cup. So that was the biggest regret that I ever had. You know, it's just terrible to see that, you know, it was good to see that England is winning, but, you know, it could have been us. Yeah. It could have been the 4 World Cup Pakistan could have won. Yes. And the most prized one was 99 one. So, but we just wasn't in our destiny. Well, let's move forward. You know, the past is like a rear view window of the car. You keep looking at it, but you keep on driving straight every now and then. But anyways, having said that, अगर मैं समझता था कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो बोल्ट तो गेम ओवर. जहाँ पे लास्ट बॉल पे 2 हिट नहीं मारी बेन स्टोक ने. I was imagining, you know, if it's Lance Klusener was standing and bowling a full toss and to hitting it to a smaller boundary, the match was over. The game was over then and there. But his intent was there. His intent was not there of Ben Stokes. Khada hota, stand and deliver, and that's it. Yeah. Done. 100%. You would have finished the World Cup in style. You have taken about 82 balls to make a 49 runs. But the main guy who's actually scored the runs, it was a 51 and a 50 runs, which is Josh Butler. Yes. He was the one who actually brought you back into the game. And he is the one that, you know, he should have won and should have finished the game, but he didn't. Yeah. You know, itna excited ho gaya, usne shots roke nahi, he should have checked his shot. Yahan khada rehta, he would have finished this World Cup about an hour ago. Yeah. There would, 1 hour to go. Yeah, there would not be this question mark that Lang, even though England did, where they're lifting the World Cup. But there will always be that question mark that will be hanging there. It was a tie. It was a tie. It is not that England has played the best of cricket, by the way. No, they haven't. I don't agree. I agree with you. It is the hard work has been paid off after 4 years. Yeah. It is the intent of the captain. It is the intent of the management. It is the intent of the whole nation actually won them the World Cup. Otherwise, actually New Zealand played better than them. Absolutely. Like a problem is then Kane Williamson did not strike back center and nahi aata. ठीक है, Grant Holmes got you the breakthrough, but he get you Ferguson back. Keep him there. Keep him there. Check him out. Butler could have hit you for a 6 twice, but you gotta attack. That's where the Kane Williamson I think lacking was the captaincy was lacking there. But anyways, having said that, I think the England deserve no one else deserved this World Cup more than England because their hard work, their intent, उनकी नेक नीति, उनका काम, उनका फोकस, वो चाहते थे यार कि ये हमें एक दफा मिल जाए और ये इनको फाइनल से नहीं मिला, ये 4 सालों के लिए मिला. I know it was. Doc, how important was this World Cup for England to win for the game of cricket, not only overseas but in England itself? Okay, 2-3 चीजें बड़ी important. एक तो none has happened before, none will happen again. I know, that's true. दूसरा जो statistically है, New Zealand hasn't lost the match. ये जो super over is not counted in the stats. So it is a tied match. So New Zealand becomes the only team in the history of world cricket not having lost the match and not winning the World Cup. Yeah. ये exciting चीज होगी जी. और third important चीज ये है कि Asia dominate कर रहा था broadcast market को. Sky was skeptical. ICC Champions Trophy was rearranged. वो scratch हो चुकी थी, but they brought it back just के साथ एक package बने with the World Cup 2019. So England winning the World Cup opens again 2 things. One, football was fast superseding cricket within the United Kingdom. So that cricket passion comes back. And secondly, एक जो हम चीज मिस कर रहे थे वो है कि अब एक English audience and Wales becomes integral part of the cricketing broadcast industry. Right. And third, शोएब ने इंग्लैंड का जिक्र किया कि 4 साल का हार्ड वर्क है. न्यूजीलैंड अभी आपने एक वर्ड यूज किया था unassuming. Yes. 4 साल में they're only 2 points behind to become number 1 test team in the world. Yes. 2 points behind India. No doubt right? about it. And they are now number 2 team in the ICC World T20s and they are in the top 3 teams in one-day international cricket. So उन्होंने भी 4 साल. Brendan McCullum, Mike Hussain, and then followed by Kane Williamson. They have also brought New Zealand up like anything. Absolutely. हमने अपने 4 साल में हमने 4 साल में तो पता नहीं खोया और पाया पता नहीं क्या इंग्लैंड का फखर इंग्लैंड का ये वर्ल्ड कप जीतना is good for the game of cricket. It is. Overall, it is a good thing. Let's take a look at those last. Well, ये तो ifs and buts नहीं है. These ifs and buts will remain for rest of history of cricket. Everybody's going to watch the highlights and is going to say ooh and ah and oh I wish and this and that and everything. लेकिन फकत डॉक्टर ने एक बात अच्छी कही कि इंग्लैंड के जीतने से ना क्रिकेट को एक बहुत दोनों का और हमको
जो बेस्ट कमाल की बात हुई है, इतनी जबरदस्त क्रिकेट, लो स्कोरिंग 241 इज नॉट अ बिट, क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली एंड इन वंडरफुल स्पिरिट ऑफ द गेम। और मैं सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी एक बात की, देयर वाज अ फाइट बिटवीन द बैट एंड द बॉल, यू नो, आराम से रन नहीं बन रहे थे, बॉलर्स भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। कहीं ना लैप्सेस तो होते कहीं ना कहीं होंगे एक प्रेशर गेम में, लेकिन आई थिंक ऑल टुगेदर वंडरफुल वंडरफुल क्रिकेट मैच। और वर्ल्ड कप का जो फिनिश था, एक जो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, न्यूजीलैंड से कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह का मैच होगा, लेकिन क्या जबरदस्त मैच हुआ है। एब्सोल्युटली इट वाज हिस्टोरिकल। फखर, एक और चीज है कि आप इंग्लैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना क्रेडिट दें कि 5 नेशनैलिटीज के 7 different players खेल रहे थे, and they have attracted, no, this is a credit for England's English infrastructure and their policies. They have attracted overseas players and they have brought them to a structure where they are paying them well, where they're looking after them well, and that is the reason today they played for England, represented England as English and won the cup for them. So this means कि उनकी जो infrastructure है that is too strong and they look after their cricketers. And ये कॉल पैक भी है जो जितना मर्जी आप and this क्रिटिसाइज कर लें, infrastructure became special in the last 4 years. they are right? looking after. Shoaib can disagree. No, not at all, not Yeah. at all, not at all. It was good Strauss stuff. का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, Yes, बहुत बड़ा हाथ of है course. Strauss का। And Strauss. Again, not an Englishman, Yeah. a yeah. South African. इसमें आप माने न माने, you know, there is a huge part of Ian Morgan that has been played out there, but the management actually has done the trick for them. Oh, yeah, the management was the magical part of this, integral part of winning the World Cup. True. ये सारे के पीछे इसके 10 लोग ऐसे बैठे हुए थे जो डे इन डे आउट इनको कार्व किया गया, कार्व, there's a carved team. It's not like ये ऐसे फिट तगड़े लंबे चौड़े बॉलर ऐसे सारे नहीं आ गए, पूरी थॉट आउट प्रोसेस किया गया। इस थॉट आउट प्रोसेस का नतीजा ये देखा गया आपने। बट ये थिंग इज, ये होती है स्मार्ट कॉम में जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हैं, जो 3 साल इन्वेस्ट करती हैं, 4 साल इन्वेस्ट करती हैं। आप मैच विनिंग टीम नहीं बनाते, आप मैच विनिंग स्मार्ट मैनेजमेंट बनाते हो। I absolutely agree with दैट विंस यू I absolutely agree वर्ल्ड with you. कप। यहाँ पे कोच खड़ा हुआ बता रहा है उसको, ये मोर्गन को, कि नहीं इसको भिजवा, इसको भिजवा, इसको भिजवा। मैं देख रहा था अब यू नो इसके पास चॉइस ही को नहीं थी, बेन स्टोक के पास, यू हैव टू गो बैक इन। Yeah. तू सेटल है, तू खेला हुआ है, बट यू नो गेटिंग अ जॉस बटलर बैक इनटू द प्लेस सुपर ओवर खेलने के लिए, it was actually the main guy, was the coach. कोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इनका स्पोर्ट्स सिस्टम जो है ना, it was just fabulous. हमें ये सीखना कि हमें आगे क्या करना है, 4 साल रिबिल्डिंग करनी है या कुछ स्मार्ट मैनेजमेंट मिलानी है कि नहीं। हाँ, एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। जब राशिद भाई, एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास मौजूद है इंग्लैंड की जिस तरह हुई है, न्यूजीलैंड की भी, हम इसको रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते? ना लड़ाए हम अपनी साइंस को, हम रेप्लिकेट कर लें। कोशिश कर रहे हैं, हाँ, कोशिश कर। देखिए इंग्लैंड की जहाँ तक बात की, डॉग ने भी की, शोएब ने भी की, इतनी बड़ी टीम नहीं है, 3 मैच हारी है, वो फाइनल ऐसे थ्रू करना चाहिए था, लेकिन आखिर तक लड़ी है। नहीं, हारा ही नहीं ना वो तो, न्यूजीलैंड तो हारी ही नहीं, आज हारी नहीं है न्यूजीलैंड, 2 टाई से गई है घर। क्या इतनी बड़ी टीम 3 मैच हारती थी? Yep. नहीं हारती थी। तो इसका मतलब है इनमें भी फॉल्ट है, ये बस जीत गए आज, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, उससे ज्यादा बस वो जीत गए बुनियादी तौर पे। स्मार्ट कैप्टन फॉर दिस टीम, Yeah, that's I'm telling you, he's just won the World Cup. Maybe you know he's be remembered yeah for many years to come. तकलैन मुश्ताक को मुबारकबाद देंगे, पाकिस्तानी है, हमारे बिल्कुल पाकिस्तानी भाई आ गए भाई, सारा विक्ट्री लैब लिया, सकलैन लिया, गोड़ा खराब है। नहीं सकलैन खुशी होती है ना जाके। सर, या खुशी, बिल्कुल बड़ी मेहनत की, काफी अरसे से टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। नहीं जी, काफी अरसे से हैं, बिल्कुल, only के ये for this बिल्कुल World Cup. सर्विसेज, कल क्वीन के में जाएगा सकलैन भी, बिल्कुल जब फिर डालेंगे क्वीन, वही सर पे हाथ फेर रहे, फोन आ जाएगा मेरे पास फिर से आ जाएगा, फोन आ जाएगा। राइट दोस्तों, इस वक्त गुफ्तगू रहेगी हमारी, बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ है, तारीखी फाइनल हुआ है, एक ऐसा फाइनल जो कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी, बिकॉज ये भी एक अनयूजुअल सी लॉर्ड्स में आपने जो है ना क्रिकेट देखी है कि आज एक टीम जिसने 2 मैचेस टाई किए, यानी कि बराबर किए, और वो वर्ल्ड कप फिर भी नहीं घर लेके जा सकती। यू नो, दिस इज हाउ बेसिकली व्हेन यू लुक एट इट। बट सॉरी, कुछ ऐड करना चाहते हैं? कह रहा हूं सैड थिंग, सैड थिंग, आई नो, आई एग्री विद यू मोहसिन भाई, इट इज अ सैड थिंग, इट इज वेरी सैड थिंग। राइट दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ चीजें आप लोगों से आखिरी दफा कर ली जाएं। टेलेनॉर की तरफ से